Okay, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. आज क्लास रे हमें बेसिकली CMA इंस्टीट्यूट रो स्टडी मैट रो इलस्ट्रेशन, स्टडी मैट रो सॉल्व क्वेश्चन, स्टडी मैट अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। बेटा तम एग्जाम पाई पर्टिकुलरली आई एम सेइंग अबाउट टू CMA एग्जाम। तो CMA एग्जाम पाई CMA इंस्टीट्यूट रो स्टडी मैट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। CMA इंस्टीट्यूट रो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। CMA इंस्टीट्यूट रो स्टडी मैट रो अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तार जो आसुची प्रैक्टिस सेट एग्जाम जस्ट मासे पूर्व 1 मंथ पूर्व आसीबो से भी बहुत इंपोर्टेंट। तो तुमको सब कवरेज करके जीवा पे पड़िबो। तो फटाफट इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। जो माने पाखरे मो मैट नाही तमे तम इंस्टीट्यूट मैट यूज करि परिबो सेम क्वेश्चन। जो माने पाखरे मो मैट अछि तो मो मैट रे गोटे सेपरेट सेक्शन रे आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन दिया जाइछि। और जदि भी नाही जदि भी से वॉल्यूम कहीं पाइन ताले चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। तमन को से वॉल्यूम मिली जिवो। बट एबे तुम पाखरे स्टडी मैट थिबो तुम स्टडी मैट रो चेक करो। कैलकुलेट द एनएवी ऑफ एक्सीलेंट फंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बड़ा एक्सीलेंट फंड रो एनएवी हमें कैलकुलेशन करिवा। हमको जो डाटा दिया जाउची से डाटा रो हमें एनएवी कैलकुलेशन करिवा कहारो ना एक्सीलेंट फंड रो। साइज ऑफ द फंड 300 crore, फेस वैल्यू 10 per unit, market value of investment 360 crore, receivable value 6 crore, accrued income 4 crore, liability 2 कोटी, accrued expenses 1 कोटी। बेटा एनएवी रो फार्मूला कौन थिला? फटाफट को एनएवी रो कौन थिला फार्मूला? सर एनएवी इज इक्वल टू अच्छा पीडीएफ रे तो लिखि हबनी। तो एनएवी रो फार्मूला कौन थिला? इलस्ट्रेशन 1 सर एनएवी थिला वैल्यू ऑफ ऑल एसेट। क्या हो रहा है इसका? माइनस वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स केमती मिलिबो ना साइज ऑफ फंड डिवाइड बाय फेस वैल्यू। साइज ऑफ फंड माने कैपिटल। तो साइज ऑफ फंड केते अछि 300 crore। साइज ऑफ फंड अछि 300 crore, फेस वैल्यू अछि 10। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ही जीवो 300 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 34। एबे वैल्यू ऑफ एसेट तो एसेट रे कोन कोन अछि? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अछि 360, रिसीवेबल अछि 6, एक्रूड इनकम गोटे एसेट 4, लायबिलिटी 2 crore माइनस हो जिवो, एक्रूड एक्सपेंसेस 1 crore ये भी गोटे लायबिलिटी माइनस हो जिवो। तेणु करी तमरो 360 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1। तो वैल्यू ऑफ एसेट राशि जीवो 360 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स राशि जीवो 30। तो चेक करो एनएवी केते आसुची।
ये गला 360 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 30 12.23. So 12.23 is the answer. NAV. Illustration 2. What about illustration 2? Read करो. A mutual fund has a net asset value of rupees 50 at the beginning of the year. But at beginning रे तार NAV अच्छी 50 टका. During the year, a sum of 4 was distributed as income, माने dividend, besides rupees 3 as capital gain distribution. So dividend distribution rupees 4, capital gain distribution rupees 3. At the end of the year, NAV was 55. So closing NAV 55. Calculate the total return for the year. Suppose the aforesaid mutual fund in the next year declare a dividend of 5 as income distribution and no capital gain distribution, and NAV at the end of second year was 50. What is the return for the second year? एटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन. एटी होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेशन करिया को देछि. हमको NAV देछि, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देछि, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन देछि. तो इलस्ट्रेशन 2. होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू कौन थिला फॉर्मूला? NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई NAV0 इंटू 100. ओके. 2 वर्ष डाटा. फर्स्ट ईयर बिगिनिंग रे NAV केते 50, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन केते 4, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन केते 3. फर्स्ट ईयर शेष रे NAV केते 55. सेकेंड ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन केते? सेकेंड ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन केते? डिविडेंड 5, कैपिटल गेन किछि नाही. सेकेंड ईयर एंड रे तमरो NAV अछि 50. तो फर्स्ट ईयर रो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमें कैलकुलेशन करिवा. फर्स्ट ईयर रो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमें कैलकुलेशन करिवा. तो क्लोजिंग NAV केते 55 माइनस ओपनिंग NAV केते 50 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन केते 4 प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन केते 3 डिवाइड बाय ओपनिंग NAV केते 50 into 100. तो देखो फर्स्ट ईयर रिटर्न केते आसुची 55 माइनस 50 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 50%. This is 24%. सेकेंड ईयर कैलकुलेशन करिवा. सेकेंड ईयर क्लोजिंग NAV केते 50 माइनस ओपनिंग NAV केते 55 प्लस अदर इनकम केते 5 डिवाइड बाय 55 into 100. तो सेकेंड ईयर 0. सेकेंड ईयर होल्डिंग पीरियड 0%. किछ ना.
ये थिला क्वेश्चन नंबर 2 ର आंसर सॉरी इलस्ट्रेशन 2 ର आंसर। नाउ इलस्ट्रेशन 3 रीड करो फटाफट इलस्ट्रेशन 3 रीड करो। मिस्टर अजय on 1/7/2019 during the initial public offer of some mutual fund invested rupees 10,000 invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each year for each unit. 31st March 2020, the dividend operated by mutual fund 10% and Mr. Ajay found that his annualized yield was 153.33%. एटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें कॉन्सेप्ट क्लास रे डिस्कशन करि सारिचे। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास करिन तमाने काइंडली बिगिनिंग रो जदी क्लास करिवो ताले तमे जानि परिबो कि क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन सरिछि। इलस्ट्रेशन 4 नेम ऑफ द स्कीम ABC साइज ऑफ द स्कीम 100 लाख फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट्स यार लिखि जे हम ताको यूनिट्स बुझिबा 10 नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग 10 लाख number of outstanding units 10 lakh market value of the funds investment receivable market value of the funds investment ता माने ये रुची value of asset 180 lakh accrued income ये भी गोटे asset 1 lakh receivable ये भी गोटे asset 1 lakh liability 50,000 accrued expenses गोटे liability तो एतिक रुची हमको मागिची कि find out NAV per unit ठीक अछि ओके। तो इलस्ट्रेशन 3 तो आम कले इलस्ट्रेशन 4 को जीवा इलस्ट्रेशन 3 ऑलरेडी आम सॉल्व कर सारीचे। नाउ इलस्ट्रेशन 4 ये क्या हो रहा है इसका इलस्ट्रेशन 4 बेटा इलस्ट्रेशन 4 रे कौन हमको मागी ना फाइंड आउट NAV पर यूनिट। तो NAV इज इक्वल टू कौन थला फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स value of all asset minus the value of all liability divided by number of units value of all asset minus the value of all liability divided by number of units। तो value of all asset भितरे कौन आसीबो asset रो value चेक करो कौन आसीबो asset रो value market value of investment आसीबो 180 market value of investment आसीबो 180 accrued income आसीबो 1 receivable आसीबो 1 accrued income आसीबो 1 receivable आसीबो 1 तादर माइनस हो जीवो लायबिलिटी केते माइनस हो जीवो 50,000 माने 0.5 पुणी आ गोटे accrued expenses 50,000 माने 0.5 डिवाइड बाय तमरो नंबर ऑफ एसेट केते सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स केते अछि 10 लाख हम सब रुपीज इन लाख्स नउचे 180 प्लस 1 माइनस 0.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 10 ये होची तमरो 18.1 ताल तमरो नेट एसेट वैल्यू होची 18.1। तो एबे हमें बेसिकली NAV ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूचे। तो इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 6 इलस्ट्रेशन 7 इलस्ट्रेशन 8
ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऊपर क्वेश्चन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रो क्वेश्चन को एबे हमें सॉल्व करबा नाही। एटा को परे सॉल्व करबा। तबे गोटे काम करो, जो एडिशनल इलस्ट्रेशन अच्छी एडिशनल इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। Mr. Sam invested in a mutual fund when NAV was 12.65 per unit. तो जितेबाला मिस्टर श्याम म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट कला सेतेबाला NAV 12.65 पर यूनिट थिला। 60 days later माने 60 दिन परे वैल्यू पर यूनिट ऑफ द फंड वाज 12.25 माने 2 मास परे 12 टंका 25 हो गला पर यूनिट NAV. In the meantime, Sam had received a cash dividend of rupees 0.5 and capital gain distribution of 0.3. तामने से वर्ष भितरे सॉरी से जो होल्डिंग पीरियड भितरे 0.5 और 0.3 कैपिटल गेन और डिविडेंड रिसीव करिछि। कंप्यूट द मंथली रिटर्न तो ताकू मासकर रिटर्न केते सिंपली हमरो क्लोजिंग एनएवी केते 12.25 माइनस कर दबा तादर ओपनिंग एनएवी केते 12.65 तो फटाफट खाता रे लेखो 12.25 minus 12.65 12.25 closing NAV minus 12.65 opening NAV plus तमरो 0.5 होची डिविडेंड plus 0.3 होची कैपिटल गेन। डिवाइड बाय तमरो ओपनिंग NAV होला 12.65 into 100 एटा होची तमरो 3.16% केते होची 3.16%। तो ये 3.16% तमरो होची 2 मासर बा 60 दिन रो तो डिवाइड बाय 60 into 30 कर दबो 1.6% approximately आसुची। Illustration 2. Mr. Sharma can earn a return of 16% by investing in equity share of his own. जदि से ता निज बलरे बा निज बुद्धि रे पैसा लगाउची ताले से 16% रिटर्न कमेइबो। ताले एटा होची रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास रे डिस्कशन करि सारिचे, कांसेप्ट क्लास रे एटा ऑलरेडी हम सॉल्व करि सारिचे। तो एटा होची रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर। Now he is considering a recently announced equity based mutual fund. से गोटे म्यूचुअल फंड विषय रे जानिया को पाइला in which initial expenses हला 5.7% जो थ्रे initial expenses 5.7% अछि और annual recurring expenses 1.7% अछि। How much the mutual fund earn to provide Sharma a return of 16%? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें कांसेप्ट क्लास रे डिस्कशन करि सारिचे। 3 number question illustration. You have purchased 2000 shares of India Hope Fund which had a net asset value of rupees 10 per unit at the beginning of the year. तमे 2000 यूनिट से किनिलो गोटे म्यूचुअल फंड रो जेतबे किनिलो तार एनएवी थिला 10 टका पर यूनिट। द फंड डिडक्टेड ए फ्रंट एंड लोड ऑफ 5%। बेटा एठी वर्ड कोन दोउची फंड डिडक्ट करूची फ्रंट एंड लोड ऑफ 5%। ओके
The securities in the fund increased in value by 10% during the year. माने म्यूचुअल फंड पाखे जी इन्वेस्टमेंट थिला वर्ष भितर से 10% बढ़ीगला. द फंड्स एक्सपेंसेस रेशियो इज 1.1%. फंड एक्सपेंसेस रेशियो के 1.1%. What is your rate of return on the fund if you sell your share at the end of the year? जदि तुम वर्ष शेष में तुम सब जगह यूनिट्स बा शेयर को बिक्री कर दौच ताहले तुम होल्डिंग पीरियड रिटर्न केते. एडिशनल इलस्ट्रेशन 3. ओके देखो क्वेश्चन बुझिया पे पड़िबो केयरफुली. जे 2000 यूनिट किनिला इंटू 10 टका ताहले 20,000 टंकार यूनिट किनला किंतु इन्वेस्टर पे करिवो कौन ना 10 टंका इंटू 1 प्लस एंट्री लोड केते परसेंट थिला 5%. ताहले 10 टंका इंटू 1 प्लस 5% ये होची 11 टंका 50. सॉरी 10.5 इंटू 2000 ताले से पेमेंट करिवो 21,000 टका. आम स्टडी मैट रे से आउ गोटे प्रकार आंसर करुच्ची. आमे 1 प्लस 5% एंट्री लोड करुचे से डिवाइड करुच्ची 0.95. दुटा जगह अप्रोच ठीक रहिबो. तमे मो अप्रोच फॉलो करो किछ असुविधा नाही. अच्छा ये जो 21,000 टंका रहिला के पेमेंट कला कस्टमर पेमेंट सॉरी यूनिट होल्डर पेमेंट कला. तो यूनिट होल्डर रो इन्वेस्टमेंट केते हला 21,000. तो यूनिट होल्डर रो इन्वेस्टमेंट 21,000 याद रखो. बट लोड बाबद केते कटि जीवो 1000. म्यूचुअल फंड को केते जीवो 20,000. काहेकि ना जो म्यूचुअल फंड सेटअप होता है ता इनिशियल एक्सपेंसेस को रिकवर करिया पई म्यूचुअल फंड कौन करे ना लोड चार्ज करे. तो ये म्यूचुअल फंड कहला मु जो 5% लोड चार्ज कली ये 5% मोर इनिशियल एक्सपेंसेस को मु रिकवर कर देली. ताला पैसा बोलला केते 20,000. एबे म्यूचुअल फंड मार्केट रे इन्वेस्ट केते करिवो 20,000 इन्वेस्ट करिवो. ताले म्यूचुअल फंड 20,000 इन्वेस्ट करिवो किंतु इन्वेस्टर रो इन्वेस्टमेंट केते 21,000. यूनिट होल्डर रो इन्वेस्टमेंट 21,000. बट म्यूचुअल फंड मार्केट को लेकर केते टंका जीवो 20,000. काहेकि ना से खर्च करिथिला जो आगुरु ताकू रिकवर कला आकू थोड़ी ना इन्वेस्ट करिकरी पुनी यूनिट होल्डर को रिटर्न दबो. कॉन्सेप्चुअली बुझिया पड़िबो ना. तो ये 20,000 रे तार 10% बढ़िबो 1.1% खर्च जीवो. ताहले 10 रो 1.1 में माइनस कर देले 8.9% ग्रो करिवो ता इन्वेस्टमेंट. केते परसेंट ग्रो करिवो 8.9%. ताहले 20,000 टा 8.9% जदि ग्रो करूची 20,000 जदि 8.9% ग्रो करूची 21,780. ताहले एबे को यूनिट होल्डर वर्ष शेष रे
21,780 टका पाइबो यूनिट होल्डर वर्ष शेष रे 21,780 पाइबो बट से इन्वेस्टमेंट करथिला केते 21,000 ताले तार रिटर्न केते ना 21,780 माइनस 21,000 डिवाइड बाय 21,000 इंटू 100 3.71%। बॉयर आंसर 3.46 कारण तार से 52 टका राउंड ऑफ है। अच्छा जदि आमे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जीवा तो जदि आमे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रे जीवा ठीक अछि ताले आमे कोन करूथिले फास्ट बुझ मोटे कैमरा को ऑफ कर दूची कहीं ना कैमरा हैंग होची जेतु तो आमे करूथिले इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एनएवी इनटू 1 प्लस एंट्री लोड आमे करूथिले इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एनएवी इनटू 1 प्लस एंट्री लोड बट क्वेश्चन एंट्री लोड वर्ड देनी चेक करा क्वेश्चन एंट्री लोड वर्ड न देकरी से कहि देछि कि फंड एंड लोड ता सहित पुनी डिडक्ट वर्ड यूज करिछि तो जोठी डिडक्ट वर्ड यूज करथिबो आ फ्रंट एंड लोड एंट्री लोड कला माने तमे आम आंसर हिसाब रे जिबा आ एठी भी जदी आम आंसर हिसाब रे जाउछो किछ प्रॉब्लम नाही अप्रोक्सीमेटली तमर आंसर ठीक रहिबो बट जेहेतु से डिडक्टेड वर्ड यूज करिछि ताले हम डिडक्टिव मेथड रे आंसर दबा तो डिडक्टिव मेथड रे आंसर होची इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एनएवी डिवाइड बाय 1 माइनस लोड ये होची डिडक्टिव मेथड एडिटिव मेथड रे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एनएवी इंटू 1 प्लस लोड ये परचेस टाइम रे एनएवी इंटू 1 माइनस लोड ये सेल टाइम रे माने मैच्योरिटी टाइम रे तो तमे आइदर एडिटिव मेथड रे चलो नहले डिडक्टिव मेथड रे चलो बट मु तुमको एडवाइस करी बोथ मेथड रे आंसर दे देबा बेटर भाई के रिस्क नबो आमे एडिटिव मेथड रे आंसर दोथिबा बट सॉल्यूशन रे डिडक्टिव मेथड रे थिबो जे खाता देखुथिबे जदि से कंसीडर न करिवे ताल तो मार्क काट देबे तनु करी तुमको बोथ हनुमान हे जिबार अछि हनुमान को कहला कि तू जा गधमार्दन पर्वत विशल्यकरणी गछाणी तो हनुमान सीधा गला गधमार्दन पर्वत विशल्यकरणी गछ को चिन्ह पाइलानी बहुत गछ से देखी ता भितर भी विशल्यकरणी गछ अच्छे तेणुक से चिंता कला कि मु थे जी पुणी आउ थे फेरिकी आसबि पुणी थे जी एते काम कर किए सीधा पर्वत को टेकी आनिकी देदेला बस तुमको एग्जाम रे भाई हनुमान टाइप हबार अच्छी तुम यदि एग्जाम हनुमान टाइप न होउछ ताहाले तुमको एते शीघ्र माने डेफिनेट सक्सेस मिलबनी तेणुक तुमको एग्जाम हनुमान टाइप रही पूरा गधमादन पर्वत को नहीं इंस्टीट्यूट देवार अच्छे इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन गला तुम सीधा नहीं थोदेव कि भाई ने तो तू तोर बाछ तोर कोटा करेक्ट आंसर मु जते आंसर देछि सब करेक्ट तते कोटा ठीक लागुछि तू देख तो जदि आमे
डिडक्टिव मेथड रे सॉल्व करिबा जदि आमे डिडक्टिव मेथड रे सॉल्व करिबा ताले कोन हे जिवो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू NAV 10 डिवाइड बाय 1 माइनस 5%, तो 10 डिवाइड बाय 1 माइनस 5%, ये होची 10.526। ताले टोटल इन्वेस्टमेंट केते टोटल इन्वेस्टमेंट हे जिवो 10.526 into 2000 2000 यूनिट किनला ना तो ये जाउची 21,052 तो 21,052 एटी 20,000 केते हितला हमर इन्वेस्टमेंट 21,780 21,780 ताले रिटर्न हे जिवो 21,780 माइनस 21,052 डिवाइड बाय 21,052 into 100 तो 21,780 माइनस 21,052 डिवाइड बाय 21,052 परसेंटेज ये होची 3.46%। तो ये हला 3.46% जोटा हमें को मेथड रे आंसर देले डिडक्टिव मेथड। तेणु करी सर आम एग्जाम रे कोन करी मु तो ऑलरेडी कहि सारलानी तुम एग्जाम रे हनुमान टाइप रो बोथ आंसर दे दबो एडिटिव मेथड रे भी दे दबो डिडक्टिव मेथड रे भी दे दबो बस कहानी खत्म क्लियर ओके। तो कैमरा जेहेतु हैंग होची मु वर्तमान ये वीडियो को एठी ब्रेक करूची पुनी कैमरा को सजाड़ी सिस्टम रेडी करी अपडेट करी नेक्स्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का सॉल्व। थैंक यू।